नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में। रोमेटिक हार्ट डिजीज की शुरुआत होती है एक सोर थ्रोट से। सोचिए, हम एज पेरेंट्स कई बार अपने बच्चों की सर्दी खांसी सोर थ्रोट को बहुत लाइटली लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो ठीक ही हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आज आप जानेंगे हमारे डॉक्टर के थ्रू कि सोर थ्रोट जैसी नाजुक सी बीमारी से कितनी गंभीर बीमारी डेवलप हो सकती है। आइए बात करते हैं RHD यानी रोमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में डिटेल में डॉक्टर थॉमस कोशी से। डॉक्टर थॉमस कोशी एक मानवीय कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट हैं। इनका अपना एक हॉस्पिटल है, होली ट्रिनिटी हॉस्पिटल। इस अलावा हीरानंदानी हॉस्पिटल से भी एसोसिएटेड है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आइए बात करते हैं रोमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में और जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स। वेलकम सर, वेलकम टू अवर शो सरल बात। So, rheumatic heart disease. First of all, I would like to know what is this disease? Before I go into what is rheumatic heart disease, I just want to tell you what exactly this terminology rheumatic disease or rheumatic fever means. Actually, कैसे होता है कि बचपन में most of the children they get this upper respiratory infection. जैसे it is a common cough, cold, sore throat, what we call. So we find that many times in the pediatric OPD, parents take their children for sore throat. Gala kharab ho gaya, they go to the doctor, take a medicine, and you've seen that once you take the medicine, in a few days the child becomes okay. Most of the times, there is absolutely no problem. But unfortunately, in some amount of people, say maybe 90 to 95 or 97% of the people, it goes away as a sore throat and it's finished. But in the what I'm saying, unfortunate that 3 to 5% of children, this sore throat later on develops what is called as rheumatic heart disease. तो अभी आप पूछेंगे ये कैसे होता है कि there is one bacteria called streptococci. Okay, this bacteria in the medical terminology is called as a beta hemolytic streptococci. So अलग-अलग नमूने का बैक्टीरिया है। तो ये जो बैक्टीरिया है, what happens is it affects the throat as a sore throat. वो sore throat चले जाएंगे. So body's immune system, जो body का जो system है, जो बैक्टीरिया को fight करता है, that will produce antibodies. And this antibodies will prevent the child from later stages developing a disease. But in some children, what happens is, ये जो antibodies जो produce करते हैं, now this antibody is produced so that next time the bacteria comes, it should fight. You're getting the point, no? So next time it should fight. But unfortunately, ये जो antibodies है, it will start thinking some parts of the body just like the germs. So उसको identify करने को नहीं हो रहा है कि ये germ है या जो अपना body का system है. So majority of the time what happens is it affects many organs, like you can say the heart is affected, or sometimes joints are affected, skin is affected, or brain and brain tissue. So many organs can be affected. So क्या होता है, ये जो antibodies जो body ने बनाया बैक्टीरिया को फाइट करने को, अभी वही एंटीबॉडी क्या करेगा, अपना ही बॉडी को डैमेज करने को लगता है. Instead of protecting you, now it is going on a war to damage your own body, because when it sees some parts of the things, like the organs I mentioned, brain, your heart, your skin, joints, उधर जाने के बाद उसको क्या लगता है, अच्छा ये बैक्टीरिया जैसे ही लग रहा है, and it will start attacking it. So in that small portion I said, because majority of the people it goes as a sore throat, but in the 3 to 5% of the people it will affect. Then when it affects the heart, we call it as rheumatic heart disease. Because बचपन में जो sore throat हुआ था, वो sore throat या properly treat नहीं हुआ था, because if it was not treated properly, these antibodies which are formed now will come and affect the heart, or it can affect brain and other organs. Once it affects the heart, it is called as a rheumatic heart disease. What are the signs of this disease? Yeah. So how it happens is, now ये जो sore throat चला गया, and what happens, this child will usually what happens maybe around 14 years 15 years, वो around that age group में
suddenly they will start developing maybe joint pains लगेगा वो. तो joint pains ऐसा रहता है कि आज वो बोलेगा कि मेरा wrist joint is paining. So after maybe evening or the next day the child will say my elbow is paining. फिर बाद में एक दिन के बाद बोलेगा my knee joint is paining. So and when the knee is paining, the elbow and the wrist joint pain is gone. Then it will go to the ankles. So it is called as a migratory polyarthritis. That is एक joint से दूसरा वो करके जाता है. When a child having this fever and with a history of sore throat, at a later date coming back to the doctor saying that मेरा अभी joints दुख रहा है, लेकिन अभी ये joint छोड़ के वही दूसरा joint हो रहा है. फिर so sometimes parents or the relatives say ये तो ऐसे ही that the child is feigning a problem कि ऐसे कुछ problem नहीं है, वो ऐसे ही ये कर रहा है. But child is having excruciating pain, वो उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाता है वो, बिकॉज नी जॉइंट में है तो द चाइल्ड कैन नॉट वॉक, और इफ इज ऑन द एंकल आल्सो द चाइल्ड कैन नॉट वॉक. इफ इट इज इन द हैंड्स एंड द थिंग, वो पेन पकड़ने को, कुछ ऑब्जेक्ट्स होल्ड करने को उसको डिफिकल्टी रहेगा. बट व्हाट हैपेंस इन अ फ्यू डेज टाइम विद द प्रॉपर मेडिकेशंस दिस पेन गोज अवे एंड जॉइंट्स को कुछ डैमेज होता ही नहीं. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कुछ बच्चों में हार्ट को जाके वो डैमेज करते हैं. नाउ हार्ट में कैसे कि हार्ट के ऊपर एक कवरिंग है विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, देन हार्ट का मसल्स है विच इज कॉल्ड मायोकार्डियम, एंड अंदर का जो हार्ट का लाइनिंग है दैट इज कॉल्ड एंडोकार्डियम. अभी डिपेंड्स ऑन विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज अफेक्टेड. इफ इट इज अफेक्टिंग द पेरिकार्डियम it will cause pericarditis. If it is affecting the muscle, it will cause myocarditis. If it is affecting the inside, it is called endocarditis. So rheumatic heart disease में rheumatic पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, रोमैटिक मायोकार्डाइटिस हो सकता है, या रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस हो सकता है. बट क्या होता है, देयर इज अ सेइंग व्हेन वी टीच आवर स्टूडेंट्स वी से दैट द रोमैटिक फीवर इट लिक्स द जॉइंट्स एंड बाइट्स द हार्ट. बोला तो वो जॉइंट पेन जो है, मैंने बताया आपको, फ्लीटिंग या माइग्रेटिंग, ये है वो चला जाता है. बट ये जो हार्ट में जो असर होता है वो लाइफ लॉन्ग रह जाता है, मीन्स इट इज बाइटिंग द हार्ट. सो दिस हार्ट जो एंडोकार्डाइटिस जो हो जाता है, बिकॉज अंदर हार्ट के अंदर आपको वेल्व्स है, हार्ट का वेल्व्स, देयर आर मेनी वेल्व्स इनसाइड द हार्ट. सो ये जो एंडोकार्डियम में वो वेल्व्स को डैमेज करेंगे तो धीरे 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 जो वेल्व्स जो है वो चोक होने लगता है. At a later date, the child will come, as it becomes an adult, it will come with different symptoms of heart disease. Then we call it as a rheumatic heart disease, like mitral valves करके, mitral valves को choke करेंगे, that will develop mitral stenosis. The valve will become choked. The blood cannot flow from one side to the other side. The blood cannot flow properly. तो ये सब जो है फिर बाद में the child or the child as it becomes an adult, it starts getting breathlessness. कुछ भी करेंगे तो थकान रहते हैं, breathless हो जाते हैं. And when it goes to the doctor after examining with the heart there are murmurs, तो उसके बावजूद they can diagnose that that there is some problem, and then an echo test is done, echocardiogram of the heart, there we see this problem. Abhi this can be treated with open heart surgery by opening the heart, and you can treat, or what you can do is now there is a balloon, just like angioplasty जो करते हैं वैसे बलून डाल के valvuloplasty जो बोलते हैं, valves को रिपेयर कर सकते हैं with a balloon. It can be done. What is the age when it affects? Yeah, I told you, because small the sore throat is affected in the small age. 5 साल 7 साल जो age में है, up to 10 years they get this, and that is the time I told you that majority of the people it just goes away. But in the little few with immunological damage, then they start developing symptoms after 18-20 years of age. So around 20-25 के age में they present with this, because वो जो heart को जो damage हुआ है, धीरे धीरे उसका symptoms आता है. So majority of the patients we see are after 18 years, 20 years, 25 years. Sometimes if it's a girl, during her first pregnancy we detect, that she had this problem. तभी पूछेंगे तो ये बचपन में शायद सोर थ्रोट रिपीटेडली होता था, एंड दैट वाज नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड. तो सोर थ्रोट है, घरेलू रेमेडी से या ऐसे चले जाते, जॉइंट पेन्स होता था, तो इट वाज नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड, देन इट विल दिस थिंग. What line of treatment will be the best for treatment of this particular disease? Yeah,
So that's a very good question. So sore throat बच्चों को होता है, repeatedly they say tonsillitis हो गया, sore throat हो गया, upper respiratory infection हो गया. Immediately the child should be taken to a proper doctor, preferably a pediatrician, and the pediatrician will examine and then immediately start proper treatment. Suppose the pediatrician now by tests finds that the child is developing a rheumatic fever, then there is prophylaxis and rheumatic heart disease develop हो रहा है, so there is an injection which is given once every 3 weeks. Once every 3 weeks, that is called a penicillin, long-acting penicillin, or called as injection Penidur. That injection is given once in 3 weeks, so that, and it has to be taken at least, till the age of around 30, 35, yeah, 40 tak, you have to take the injection so that the child will not develop the complications of the heart disease. So, because what happens, ये जो heart में develop होता है, कभी-कभी there is infection of the heart valves also, that is called endocarditis. That is a very dangerous this one. So ये सब prevent करने के लिए this injection is given, which is called as injection Penidura or injection procaine penicillin. It is given once in every 3 weeks to prevent this rheumatic heart disease from worsening. And एक बार हुआ तो मैंने बताया आपको या open heart surgery करना पड़ेगा if medicine stop working, or if by a balloon it has to be treated. Sometimes only one valve is affected, sometimes multiple valves are affected. तो फिर वो treatment सब valves को repair करने का ये रहता है. बचपन में ध्यान नहीं गया एंड व्हेन द पर्सन इज ग्रोन अप एंड इट हैज बीन रियलाइज्ड कि उसको रोमेटिक हार्ट डिजीज है और वाल्व वगैरह चेंज करना है एंड द पर्सन अंडरगोस this particular surgery treatment line of treatment, then what precautions to be taken by such a patient who has undergone surgery because of this particular disease? Yeah, once it is done, now it depends on what type of valve is put. Because now what we do is, you can have metallic valves, or you can have, natural valves put in. But after that, there will be lifelong, the patient will be on blood thinners. Medicine ऐसा देंगे because जो blood को पतला रखने को, because this valve that is there, and some antibiotic prophylaxis also will be given. And regular they have to go to the doctor and get it checked so that it is there. But usually after the surgery, the patient can have quite a good and a normal life without much of a problem. So is there any age limit, if the person has crossed a particular age, then this surgery or the change of valve cannot be done, or it is at high risk? Now, I told you, because sometimes what happens, patients come at very terminal stage. By the time what happens, the heart valves जो है वो जो leak करता है, it has damaged the heart. I told you either the covering is damaged or the heart has become too much enlarged, and what is called as the heart failure में चले जाते हैं. Once heart fails, then it is a little risky. So at an early stage, when the patient gets symptoms, it is always better to go to the doctor, a proper cardiologist, and then get it examined. And then the doctor will guide the patient as to when is a correct time for the surgery. Because initially medicines are put, and then the patient at the time, when it is required, deemed necessary. So different criteria are there. So then accordingly, the doctor will guide the patient for the surgery. Thank you so much, sir, for giving such an information and sharing your valuable time with us. दोस्तों, हम इसी तरीके से नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, नए लोगों को आपसे मिलवाते रहेंगे. इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. हम फिर मिलते हैं. थैंक यू.